कांग्रेस पहली टीम है सेमीफाइनल में पहुंची और कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त दिखी है। हालांकि जो हमेशा आपने टॉस जीता और गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद बल्लेबाजों को कम स्कोर मिला। कैसे देखते हैं अब तक के सफ़र को और कितना कॉन्फिडेंस अब टीम के पास? नहीं, हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक। स्टिल एक दो एरियाज़ है जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फील्डिंग भी हमारी अच्छी रही है। यस, हमने कुछ कैचेस छोड़े हैं, बट इस टूर्नामेंट में अभी तक देखा गया है काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। सो इट्स मोर लाइक कि सारी टीमों से कुछ गलतियाँ हो रही है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग कैचेस। जहाँ तक मिडिल ऑर्डर की उतनी टेस्टिंग नहीं हुई है तो दैट्स रियली बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। विराट ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रोहित ने अच्छी बैटिंग की है। जो लास्ट 3 मैचेस हमने खेले हैं उसमें तो यस दे हैव नॉट बीन टेस्टेड, बट ये है कि थोड़ी मोड़ी बैटिंग सबने की है। सुरेश रैना ने भी बैटिंग की है, यूवी को भी थोड़ी बैटिंग मिली है। जडेजा और अश्विन दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी तक उतनी बैटिंग नहीं मिली है। सो उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो यही है कि नेट्स में उनको प्रायोरिटी देके हम पहले ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश बॉलर्स के अगेंस्ट में उनको बैटिंग करा रहे हैं। सो विल सी हाउ इट गोज़. Captain, today you came in at number 4, and you batted really well. So, are there plans to bat number 4 in the coming matches? No, it will depend on the situation, depending on the bowling attack and everything. We'll see how best we can use the kind of batsmen we have got. The good thing is we have got quite a few left-handers and right-handers in the side. So, we can exploit that. So, we'll see, who are the bowlers who have overs left, whether the wicket is turning or not, or if the opposition, what kind of fast bowlers they have got. And depending on that, we'll see who is the best suited and we'll promote the batsman. Hi, Mai. The other day you said that you're still trying to figure out who's going to bowl in the death. You bowled Jadeja, Bhuvi, Shami in the first game, Jadeja, Shami in the second game, and now Mishra came and bowled in the death. You feel like you've figured out your death bowlers now? No, frankly, no, because again, how we talked about the batsman, how we will use the batsman, I think the same thing will imply on the bowlers also. We'll see what's the kind of help that the bowlers are getting, where the wicket is placed. Like you saw in today's game, there was one side which was quite small compared to the other side. So we'll have to exploit all that. The fast bowlers, Bhuvi has done quite well for us. Shami is still struggling a bit. He has given a bit of runs. But overall, they are the ones who have done well for us consistently in the past 1 year. So we'll see, depending on the situation, we'll see, who are the bowlers who need to bowl the last few. MS, how pleasing is it to see that your bowling plans are going as all your bowling changes are working, bowlers are doing well? How pleasing is that? And how much planning has gone into deciding who to bowl when, and when do you decide these bowling changes, and what are the factors that go into it? Well, the bowling changes usually I decide on the field. Like today I wanted to start with fast bowler, but once Bhuvi bowled the first over, I was like, I don't want to use Shami right now. I want to use Ashwin from the other end. I think in this format you have to be very flexible. You have to see how the batsmen they are batting, who is batting, and accordingly you will have to keep changing your plans. So that's what it is. I try to shuffle the bowlers according to how the batsmen they are playing and who are the ones who are at the crease at that point of time. So I don't come in with a fixed plan. I change. I keep myself flexible, and accordingly I make my changes. One of the concerns coming into this tournament was that India don't play enough T20 internationals. What is it that has gone right this time, and how much of a role has Mishra had to play in this resurgence? Well, I think when you look at the bowlers, they are getting some kind of a help. Where we have struggled in limited over format, not only in the T20, I think in the 50 over version also, is wickets which are good to bat on, but who doesn't support the spinners very well. And that means even the part-timers, they have struggled to give us those few overs, apart from Raina in the subcontinent who has done well. So that's where we have struggled, if there's not much lateral movement, our bowlers, they bowl at the right pace, to get hit maybe, but the bowlers who bowl quick, they don't bowl in the same areas. We have seen, definitely we have got potential when it comes to sheer fast bowling. Varun is someone who can bowl quick. Umesh is someone who can bowl 140 plus, but still they are finding their line and length, and it may take a bit of time because once they go back and play in their domestic season, they can just bowl back of a length and they'll get away with it in most games. But in the international circuit, it doesn't really happen. So in this tournament particularly, I feel there is a bit of purchase for the spinners. We are playing with 3 spinners. Even the part-timers are very useful. Raina is bowling well for us. We have still not used Yuvraj Singh and Virat Kohli if needed. Rohit Sharma is also there. So
when the conditions favor us, I think our bowlers become very exciting and they make the most out of it. But where we have struggled are the wickets, where there's no purchase for the spinners. भाई पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सेमीफाइनल पहुंचने के लिए, क्योंकि पूरे ढाका का माहौल है कि इंडिया बहुत फेवरेट है और हम लोग चाहते हैं कि उसको आप रखें. सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछना था कि आज युवराज को ऐसा लग रहा था कि आज, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस में बहुत मेहनत की थी, काफ़ी उन्होंने पसीना बहा, लेकिन आज उनको न आपने बॉलिंग के लिए मौका दिया, न आपने उनको बैटिंग के लिए मौका दिया, जबकि आज एक ऐसा अच्छी टीम के साथ कोई था नहीं, आपको देना था उनको मौका. ऐसा हम लोगों का आज मेरा मानना है खास करके. नहीं, अगर आप बांग्लादेश को अच्छी टीम नहीं बोलेंगे तो इस फॉर्मेट में इट कैन रियली बाइट यू. द रीज़न बीइंग इस छोटे फॉर्मेट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो अच्छी टीमें हैं और जो एवरेज या अबव एवरेज टीम है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है. लंबे फॉर्मेट में एट टाइम्स आपको कंसिस्टेंटली थोड़े पीरियड के लिए अच्छा खेलना पड़ता है. T20 फॉर्मेट में ऐसा देखा गया है कि अगर सिर्फ लक आपके साथ है, आपके लोअर ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, इधर उधर उन्होंने घुमाया, एज लग के अगर कीपर के पीछे 2-3 चौके मिल गया, स्टिल इट काउंट्स. एंड इस छोटे फॉर्मेट में उस दूरी को बहुत कम कर दिया है. तो जो भी आप मैचेस खेलते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, एवरी गेम हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. और जहाँ तक यूवी की बात की जाए, सिर्फ यूवी मेहनत नहीं कर रहे थे, बहुत दूसरे लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे थे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. यूवी अगर फॉर्म में आते हैं तो हमने देखा है कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं. और आई थिंक उस बेसिस पे सिर्फ मैं उनको बैटिंग नहीं दे सकता हूँ. आज मुझे भी बैटिंग करना था, काफ़ी टाइम से मैंने भी बैटिंग नहीं की है. सो इट वाज अ लेट डिसीजन. मैंने बोला कि आई शुड गो एंड प्ले अ बिट. मैं इसी बारे में पूछना था, क्या ये हेडेक है कि अभी तक बैटिंग टेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि 130 के आसपास ही हमारे बॉलर सामने वाले को आउट कर रहे हैं, हम आराम से चेस कर रहे हैं, तो क्या ये थोड़ा सा स्वीट हेडेक है? थोड़ी अच्छी फीलिंग तो है, क्योंकि जब आप 130 या 132, 35 या 40 चेस कर रहे होते हो तो आप नहीं चाहते हो कि आपकी पूरी बैटिंग लाइन टेस्ट हो, क्योंकि अगर आपकी बहुत ज़्यादा बैटिंग लाइन टेस्ट होगी तो भी आप कुछ हद तक ये सोच सकते हैं कि यार हम बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं. जिस तरीके से हमने ये 3 मैचेस जीते हैं, एटलीस्ट हम कॉन्फिडेंट है कि हमने अच्छी बैटिंग की है. ये है कि आने वाले मैचेस में जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि दे आर द वंस हु हैव मोर एक्सपोजर. इस कंडीशन में उन्होंने काफ़ी बैटिंग की है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कंटिन्यू. एटलीस्ट जो टॉप 3 या 4 बैट्समैन है उनमें से एक अगर लंबा इनिंग्स खेलता है तो बाकियों के लिए आसान हो जाएगा. दे कैन कम इन एंड प्ले द बिग शॉट. सो दैट विल बी द थ्योरी एज फार एज द कमिंग गेम्स आर कंसर्न. बट सबको बैटिंग के बारे में हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सारे मैचेस जीतने भी बहुत इंपॉर्टेंट थे. लास्ट T20 में हमने देखा, जब वर्ल्ड कप हुआ था तो हम सिर्फ एक मैच हारे थे और टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. तो इस बार इंपॉर्टेंट था कि हम सारे मैचेस जीतें और अच्छे से जीतें. Bhai, just lending into your answer there, I mean, since 2007 is the first time India have made the semi-final. So, was that a consideration or a discussion for the team ahead of the tournament, given the off color they were in a bit coming into the tournament? No, we don't really discuss all that, because one of the factors you are supposed to play well, and that's what the criteria is. Like if just the consideration was getting into the semi-finals, then what do you do once you reach the semi-finals? You should be happy and just stay there and say, okay, we reached the semi-finals, we don't really want to play it. So I feel what we did was we came in with nothing really in mind. We knew the condition quite well. We play in the subcontinent quite a few games, especially the IPL, so we had the right kind of exposure. We knew the kind of problems that we would face when it comes to bowling and batting, and we had to overcome that. So again, we were concentrating on the process, irrespective of what format you are playing. I feel it's always the process, that's very important, because once you know the problem areas, you can work on it. And in a tournament like this, it's very important that you don't expose yourself, your weak links, to the opposition too much. Before I ask my question, I would like to ask you, do you have to stick to the questions only to T20, or the captain can say something about things that's happening off the ground? Sorry? Only T20. You can go back to India and ask them, no? No, it's only 40 minutes flight. No, there has been rumors that, couple of reports that you are going to resign after this T20. He just said, I won't answer, so don't ask me. My bhai, apologies for asking you, obviously considering the controversies circling around back home, so it speaks volumes about the character of this team. Means
What is the secret of this team? Obviously, you being so calm and composed means you never let the pressure into your boys. So what is the secret of the success for this team? I think a good dressing room atmosphere, having belief in yourself, and enjoying each other's success. Simply you can put everything onto it, because a lot of things happens around cricket, but you have to be focused when you're representing your country. So that's one thing that this team has done really well, and of course accepting the challenge, enjoying the challenge, and trying to prove that you're one of the best when it comes to international cricketers. And once you are in as a batsman, you want to take the team through. If you are bowling well on that particular day, again you want to take wickets for the team. If you are a part-timer, the same thing implies. So I think it's all about the dressing room atmosphere, and we have kept it really nice.